Cloud attributes. Core attributes of the cloud computing. We will discuss all these attributes one by one. Off-premise. The service is hosted and delivered from a location that belongs to a service provider. This usually has two implications. The service is delivered over the public internet and the processing occurs outside the company firewall. We do have the service provider, we do have the service consumer. In cloud computing environment, we do have a number of the providers which are contributing in provision of services to the cloud users. In cloud computing environment, the service is hosted and delivered from a location that belongs to a service provider. It means service provider ही सर्विस को होस्ट कर रहा है और सर्विस जो है उसी की लोकेशन से एंड यूजर्स को डिलीवर हो रही है. It means we do have some of the issues. The service is delivered of the public internet. It may have some security issues as the processing occurs outside the company firewall. It depends upon the trustability over the service provider. Okay, cloud consumer या service consumer ने trust करना है over the service provider. It means off-premise that must ensure a trust between the service provider and the service consumer. Elasticity. Elasticity is also one of the core attributes of the cloud computing. The inherent scalability of service provider is made available to the end users. The model goes much further in providing elastic provision mechanism so that resources could be scaled up and scaled down very rapidly as required. Inherent scalability service provider की exist करनी चाहिए because the demand of the end user could be increased. तो resources की provision, resources की जो availability है end users को must be well satisfied. और cloud computing में scalability exist करती है because number of resources which are joining the cloud could be increased or decreased. Or even number of users which are joining the cloud could be increased or decreased. तो scalability exist कर रही होती है cloud computing environment में. इसी तरह users की जो demand है with time may be increased. तो cloud computing की environment को यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए elasticity को मेंटेन करना होता है. Flexible billing, fine-grained metering or resource usage combined with on-demand service provisioning facilitate a number of options for charging customers. Fee can be revived on a subscription basis or could be tied to actual consumption or reservation of the resources. We do have the different cloud computing models जो बिलिंग के लिए वर्कआउट करते हैं. कुछ डिपेंड करते हैं मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस, कुछ डिपेंड करते हैं ऑन एक्चुअल कंजम्पशन. तो डिफरेंट टाइप्स के बिलिंग मैकेनिज्म्स क्लाउड कंप्यूटिंग में एग्जिस्ट करें. Virtualization, that's another core attributes of the cloud computing. Services are usually offered through an abstracted infrastructure. They leverage various virtualization mechanisms and achieve cost optimization through multi-tenancy. Multi-tenancy means multiple organizations are contributing towards the system. तो हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे विजुअलाइज होते हैं एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज करती है. Service delivery. Functionality is available as service of some form. While there is great variance in nature of these services, typically the services offer programmatic interfaces in addition to the user interfaces. User concern, consumer concern is basically the quality of service. And cloud computing ensure करता है the quality of service must be well met. तो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड यूजर्स की
क्लाउड कंप्यूटिंग ने उन उन सर्विसेज को एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स अवेलेबल करना होता है। एंड सर्विसेज किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, APIs भी हो सकती हैं। We do have a variety of the services could be available from the cloud providers. Universal access. Cloud aims to ensure pool resources are available to anyone authorized to utilize them. At the same time, location dependence and high level of presence allows for an always connected user experience. We do have pooled resources. Pooled resources mean different organizations are contributing to resource factors. An authorized user could access them. And we do have the universal access. It means at the same time, location independence hai, a user could have access to the resources and could get the experience. Simplified management. Administration is simplified through automatic provisioning to meet the scalability requirement, user self-service to expedite business processes, and programmatically accessible resources that facilitate integration into enterprise management framework. It means cloud computing का administrative framework simple हो, जिसके थ्रू सारी की सारी सर्विसेज वेल वे से मैनेज की जा सकें, नई सर्विसेज एडअप की जा सकें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरऑल एनवायरनमेंट मस्ट बी अ सिंपल बट सिक्योर इनफ। Affordable resources. The cost of resources is reduced. No need for fixed purchases. Economy of scale as service provider can optimize cost with relation to demand. Economic cloud. There is another concept. Economic cloud also work in cost optimizations. एक यूजर है जिसकी डिमांड इंक्रीज कर रही है विद टाइम। A service provider could apply a different cost model on usage of those resources. So accordingly, resources की requirement के लिहाज से different type के cost model apply होते हैं cloud computing environment में, और accordingly जो service consumers हैं depending upon कि उनका resource का usage क्या है, अकॉर्डिंगली वो कास्ट मॉडल में से वो सिलेक्ट करते हैं और सर्विसेज को यूज करते हैं फ्रॉम दी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। मल्टी टेनेंसी. रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. मल्टी टेनेंट्स and include mechanism to protect and isolate each tenant from all others. Pooling resources across customer is also an important factor in achieving scalability and cost saving. Multi-tenancies exist करती है कि हमारे पास even cloud environment में जितनी organization contribute कर रही होती हैं, we do have multiple organizations from the multiple maybe countries, continent. Question is कि resources जो pull up होते हैं वो भी multi टेनेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो रहे होते हैं, और जो रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं वो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट वे से वर्कआउट कर रही होती हैं, डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रही होती हैं। मे बी some companies working in banking network, maybe another one in education setup, and third one maybe in stock exchange. तो हर एक ने रिसोर्सेज को यूज करना है एज पर देयर नीड्स। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन, आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी आर the core concern when we have the multi-tenancy from the service provider, when we have the multi-tenancy from the user end. Service level agreement. This is called SLA. The cloud environment is governed by service level agreement, which set out the expectation of the user and responsibilities of the service provider. The agreement है which is signed between cloud user and cloud service provider. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल करनी है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या यूजर की डिमांड्स हैं,
what cloud service provider is expecting from the user and what a user is expecting from the service provider. तो ये एक MOU साइन होता है बिटवीन द यूजर एंड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. अकॉर्डिंगली एक्ट होता है. इफ अ सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, जिस तरह रिटर्न थी एग्रीमेंट में जो डिमांड्स थी जिनके अगेंस्ट यूजर ने पेमेंट की है, अगर वो मीट नहीं होती तो सर्विस प्रोवाइडर को पेनल्टीज जो है इन्फोर्स की जाती हैं. And security is one of the hard issue in provision of the services from the service provider to the end users.